अमेरिका रे मोदी बाइडेन साक्षात 3 दिनिया अमेरिका गस्तर प्रथम दिन बाइडेन को साक्षात करिसेंति मोदी। बाइडेन को डेलावार ग्रीनभैली बासभवन रे द्विपाक्षिक बैठक आयोजन करथिले बाइडेन। उभयक मध्य फलप्रद एवं प्रभावी आलोचना होइथिबा दुई नेता बैठक पर सोशल मीडिया एक्स रे उल्लेख करिसेंति। मोदी को स्वागत करी आलिंगन करथिले बाइडेन। उभयक मध्य द्विपाक्षिक आंचलिक एवं अंतर्जातीय प्रसंग में आलोचना होइथिला। भारत अमेरिका मध्य संपर्क किपरि आहुरी निबिड़ हेब ता उपरि थिला बैठकर फोकस। आलोचना रे ड्रोन डील स्थान पाइथिला। अमेरिका ठारू भारत 31टी MQ-9B स्काई गार्डियन एवं सी गार्डियन ड्रोन किनिब, जार मूल्य $3 बिलियन। द्विपाक्षिक आलोचना को अत्यंत फलप्रद बोली मोदी कहते। सेहीपरि बाइडेन कहते भारत अमेरिका संपर्क जेतिकी सुदृढ़ होइछि अतीत रे केबे होई नथिला। आलोचना बेले मोदी सहित वैदेशिक मंत्री और वैदेशिक सचिव उपस्थित रही। भारतर 297टी प्राचीन कलाकृति फेराई देवा को अमेरिका प्रतिश्रुति देइछि। याकु नै अमेरिका सरकार और बाइडेन को धन्यवाद जणाइछन्ति मोदी। With the United States, I would point to a very special feature of that bilateral meeting, which was the return of nearly 300 antiquities to India. So here we were talking not just about Vikas but also about Virasat. In a sense, it was a farewell meeting with President Biden, and the fact that it was taking place at his personal residence made it all the more special. In fact, he mentioned to him that in India we say जब दिल के दरवाजे खुल जाते हैं तो घर के दरवाजे भी खुल जाते हैं. And he said that you have today opened the doors of your home to us. The fact that the doors of your heart have been opened to us has been known for a long time. So there was a very, very, very personal and a very emotional connect between the two leaders, and the setting of the meeting itself was very special. As I mentioned to you, insofar as the return of the antiquities is concerned, 3 of those antiquities were actually up for display in President Biden's residence, and the two leaders were able to inspect the antiquities there and take a look at them there. So it was a very, very special meeting in all respects.